शिव शास्त्री बल्लाव फिल्म का हुआ ट्रेलर लॉन्च। अनुपम खेर, नीना गुप्ता ने कही ये बात। And now, ladies and gentlemen, she never grows old. This one is one charisma, or what may I say, that beauty forever. Ladies and gentlemen, Neena Gupta. And now, in fact, for all the students right here, including me, I want to introduce the next cast here, who is a very important and integral part of the movie. Without him, this movie was not there. Also, he happens to be our guru. But ladies and gentlemen, this is talent powerhouse. He is versatile. And let me tell you, he's a legend but does not want to be called as a legend. Ladies and gentlemen, great pride as a student to be calling Anupam Kher. And can we have mics for them? So my first question, actually, are we ready? Are we good enough to go, or do you want some time to breathe? Do you want some time to actually sink in the trailer? How does it feel? Nice? Very good. Okay. I've been breathing for the last so many years. Okay, I actually have my first question. I'm going to come here so that I can talk to. I have my first question to the director here. Yes. Sir, आपने बहुत एक hit series बनाई, which is your Metro Park, right? So, and this is a very well acclaimed series. Tell me, was it difficult to actually cast them together? What actually made you feel that you have to cast all of them together? What was the inspiration? I should say I'm just plain lucky that the whole thing happened. When I initially had the idea in my mind, I had drawn a poster by hand, just for an inspiration. I put it up on the wall. And I looked back at the poster maybe after a year later, and they exactly look like Anupam sir and Neena ma'am. So it was all destiny. Somehow it was supposed to happen, and both of them got together and joined the film, and we had a nice crazy ride with it too. So you have beauties, you have brain, you have talent, you also have brown. May I know how will you bifurcate all of them? Who is the beauties? Who is the browns, and who is the brain and the talent here? It's loaded with talent and beauty. So this has been an amazing ride, especially for all of us. It's been a long journey, as Sir was talking about, but we are really excited for you guys to see this and be part of the journey. Congratulations, the trailer is out and it looks amazing, and I can see your hard work here. Thank you so much. Well, now for Anupam sir, आपके साथ तो बहुत मैं अभी भी बता दूं, अभी भी हर स्टूडेंट नर्वस होता है अपने गुरु के सामने. I am also nervous. सर जरा संभाल लीजिए मुझे आप. ओके सर, आप तो बताइए, पहली बात तो ये पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा है. लुक्स लाइक ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत वर्कआउट किया है. रियली बहुत वर्कआउट किया है इस फिल्म के लिए. First of all, thank you, and I must acknowledge my students who are here. Well, I'm thankful to all of you who have come here. In fact, we have invited you, but to just give you an experience, and the biggest, most amazing moment for me will be when they will be sitting here and I'll be sitting in the audience. Oh, this is so nice. Thank you so much. Thank you. This is a very special film. Everybody says very special, but this is a very special film because when you get movies and when you get roles which make you go beyond your boundaries, beyond your horizons, that's where a person who has done so much work challenges himself or herself, for that matter. Shiv Shastri Balboa challenged me not only in my mental space but also in my physical space. Even though I am not playing a boxer in it, but he has the mentality of boxer in it. There's a very famous quote which says, it's not important to fall down, it's also important to get up, to rise. I'm very moved by this event today because it's very important to make films which you believe in, but it's also very important to make films which run, because at the end of it you may make film for your own personal stimulation, but it's very important. That's why people like Neena and Nargis and Sharib and we have done work for years, at least me and Neena. And now we've finally got this recognition. मेरा छोटा सा फेस होता था 35 साल तक एक पोस्टर पे नीचे कहीं ऐसा करता हुआ एक चेहरा. And after 38 years in the movie business, I'm finally on the main poster along with my heroine. That's, I think, the great achievement. And that you can achieve only with hard work, not necessarily with stardom.
बिकॉज हार्ड वर्क स्टेज विद यू, वो आपके साथ रहता है। स्टार्टअप आती है, मेरे 37 साल के करियर में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, मगर हम अभी तक बरकरार हैं बिकॉज हमारे अंदर शिव शास्त्री बेलबुआ की स्पिरिट है कहीं ना कहीं। फैंटास्टिक सर। सर मैंने एक्चुअली आपके एक इंटरव्यू में भी सुना था, जो अभी आपने कहा कि आप इतने लंबे करियर में आप हमेशा एक एक छोटा सा अंग रहते थे, और इस टाइम एक्चुअली आप लीड जैसे एक पूरा एक हीरो जैसे बाहर पोस्टर में नजर आ रहे हैं। ये बात आपने अपनी मम्मी से शेयर करी? हाँ, क्योंकि आप इतनी सारी पोस्ट करते रहते हैं अपनी माँ के बारे में। मेरी माँ ने कहा तेरे को पोस्टर पे आने के लिए नंगा तो नहीं होना पड़ा ना। नहीं, I think it's wonderful to come into this theater and see posters of all of us all over the place. It's a very humbling feeling at the end of it. It means people, that's why I said to everybody not to call us legends. This is a newcomer. It's rebirth. It's very humble, sir. Yeah. Only No, I mean somebody it. who has worked so much can actually say No, I this. mean it. I think it's नीना जानती है और हम जानते हैं, हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, ये मेरे से 1 साल जूनियर थी, हमने कहाँ से शुरुआत की है, कहाँ हम मुंबई में आके धक्के खाते रहे और फिर काम मिला, फिर ऊपर उतार चढ़ाव हुआ, और आज मुझे बड़ा गर्व है अपने ऊपर और मेरे इस पूरी टीम के ऊपर कि हम अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ पर पहुँचे, एंड दैट्स वेरी ग्रेटिफाइंग। Very nice. So you are an inspiration for all of us, and और अभी इस क्वेश्चन के बाद आप सिर्फ एंकर बनिए, मेरी स्टूडेंट नहीं है अब आप। अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मुझे ऑर्डर आ गया है यहाँ से। ओके सर, बट स्टूडेंट ऑल योर लाइफ सर। Of course, that you will be. I'm very proud of you. Thank you. Well, now let me ask the beautiful Neena Gupta right here. First of all, can you share a little about the film, the trailer that you just see? How do you feel? For me, always, whenever you make anything, you write a novel, you make a documentary, you make a film, मुझे लगता है हमेशा उसमें उसे कुछ कहना चाहिए लोगों को, उसमें कुछ मुद्दा होना चाहिए, उसमें कुछ बात होनी चाहिए जो लोगों तक पहुँचे, लोगों को लगे। और मैंने बहुत सारे ऐसे काम देखे हैं जिनमें बहुत प्रीची तरह से बताया जाता है। शिव शास्त्री बाल्बोआ की सबसे विशेष बात यह है कि हंसते खेलते हुए एक बहुत बड़े टॉपिक को डिस्कस किया है ना अजय। वो टॉपिक जो बाहर के मुल्कों में रहने वाली मेरे जैसी, एल्सा जैसी औरतों के साथ होता रहा है, उसको ऐसे टैकल किया कि पता ही नहीं चलता। खेल खेल में, बात में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। मुझे लगता है वो इस तरह की बात जब कही जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू जयन, आपने इस तरह से ये फिल्म बनाई कि मज़ा भी है, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, रोमांस भी है, रोमांचक भी है, तो इसमें सब कुछ है, ऐसा मुझे लगा जब मैंने देखी। मैम, आप इसमें तेलुगु कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, थोड़ा सा कुछ सर ने कुछ रिसर्च करने कहा, या व्हाट वाज योर इनपुट दैट मस्ट हैव गॉन टू प्ले दैट तेलुगु कैरेक्टर, बिकॉज आई कैन सी दैट आपने डायलेक्ट भी वैसे पिकअप किया था। हाउ व्हेन सर भी कर रहे थे। हाउ तो बड़ा आसान है। जैसे मैंने एक छोटा सा उसमें बोला, मैं एल्सा, मैं अमेरिका में रहती, तो ये इतना सा है ना बोल के तो वो फ़र्क हो जाता है। सो हमारे यूनिट में एक लेडी थी जो साउंड कर रही थी, वो वहीं से थी, हैदराबाद से थी। तो मैं हर लाइन बोलने से पहले जहाँ ऐसा कुछ होता था उनसे बोलती थी प्लीज़ एक बार बोल के बता दो, और फिर वो उसको करती थी। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा लहजा नहीं किया है, हल्का हल्का टच दिया है, तो आप समझ जाते हैं कि भाई ये वहाँ से आई है। और मैम, एक चीज़ मुझे पता चली है कि आपको एक बहुत स्पेशल नाम से इस मूवी में बुलाया जा रहा है, चीयर्स लेडी और चीयर्स लेडी ना, आपके Cheers. पोस्टर के पीछे लिखा है आपके, हाँ, यार, चीयर्स। चीयर्स, व्हाट इज दैट अबाउट, इफ आई कैन नो? नहीं, इसमें नहीं है, आपके पास सोलो पोस्टर में है। हाँ, चीयर्स गर्ल, चीयर्स लेडी, व्हाट इज दैट, इफ माय ऑडियंस वांट्स टू नो? मैं ये नहीं बताऊंगी अब। अरे मैं बता देता हूँ। अच्छा। फिल्म में नीना जी को वोडका बड़ी पसंद है फिल्म में, तो इसलिए वो चेयर गर्ल नहीं है, चीयर्स गर्ल है। That's it's a very smart. मुझे लगा ये हम वो रखने वाले हैं मिस्ट्री। अबे ट्रेलर में बोला क्या पी रही हूँ वोडका? एक बार पिया है, पिक्चर में तो बहुत बार पिया है। No. But I must acknowledge the efforts made by our people who made the posters. I think that they've done a great job.
Yes. No, I think you guys in together in sync look very nice on the poster. Without you all, not at all. Okay, now I'm actually going to go to Nargis here. Nargis, first of all, welcome, and you're looking very nice in the film. You actually are beautiful and pleasing. You have a pleasing personality. Would you think if you can just tell us your experience while working in the film? I mean, I had a wonderful experience working with these two, and when you guys see the film, you'll know why. It's a great adventure. So I'm really blessed to be a part of it. This was something very different for me. Exactly. I know you say Exactly. I'm very pleasing looking, Yes. and I always try my best, but you know, I feel like I'm evolving. You know, trying to make a change. What's the word? Reinventing myself, you know? Oh my God, I can That's a actually good see word, that. right? So I really enjoyed playing my character. I think that, yes, I'm pretty, but there's a lot of acting there. I wish I could also say that, yes, I'm good looking. But I'm gonna take the. Yeah, Well, listen, I can't say no. I'm not good looking. No, I have to. Yeah. Was there any inhibition that you actually took off you were looking very plain Jane? Was there any inhibition that No, not at all, because I'm getting into character. When you're acting, you gotta be whatever you gotta be. That's the job. You gotta do what you gotta do. So I really enjoyed that, and it was very interesting because, you know, it was a very lovely role. These two are the main, and you know, having this role, being a supporting actor it was a joy, and it's something different for me. And it's a different kind of movie. It's very realistic. I love the way it was shot and written, and all the acting was so real. So I enjoyed this role a lot. Whether like big or small, this role had such an impact. And I think I don't know, when they'll know, they will know. Our support was really important. I think we helped to bring a lot of spice. Along with all your spice, we bring the extra spice. You are the spice Yeah. of the film, and we are the life of the film. Yeah, okay, cool, I like that. And my friend Satish Kaushik has come now. And He's yes. the- Welcome. एक बात मैं कहना चाहूँगी नरगिस के बारे में कि ये इतनी प्लेजेंट है, सेट पे इनके आने से एक खुशी का एटमॉस्फेयर हो जाता है, बहुत प्लेजेंट है, हैप्पी, खासकर लड़कों में। हाँ? ये एक ऑनेस्ट क्या बोलना चाहते हो तुम? दिल से जवाब दिया है शाहरुख ने। ना शी इज वेरी प्लेजेंट, हैप्पी, कुछ क्या मन में कुछ और नहीं है, जो है सामने है, वो मुझे लगा इनके साथ काम Yeah, करके। she's very amazing, positive Yeah. energy. Yeah. She's beautiful as a person also. Thank you. So Nargis, was it how difficult was it to work? You know, you're working with some powerhouses, like talent powerhouse here, and was it like something? What did you feel any kind of hitches, any hurdles when you? What did you prepare? So I am so happy to work with both of you, as you are. I know you don't want to be legends, Of course. icons. But they are, but they don't want to be called. They don't want to be called. Yeah. It was great because you always helped me, and I really appreciate that. And you know, sometimes you get lucky, you do get to work with people that help you. But he's an amazing teacher, I'm sure, because on set he would help me a lot. And So you got practical lessons. yes, you know, he would be a teacher for, I guess, a guru as well. I really appreciate you letting me know if something, whatever, or you would say something in a way to help me change something. So yeah, he was my teacher also, not only my co-actor, which I sweet. love that. Thank you. Sweet, so Thank sweet. you. That's very. Thank you. All right, now going up to the Urdu and the Hindi dialect master, of course, we have Sharib Hashmi. Ladies and gentlemen, can I hear it for Sharib? So Sharib, बहुत सारे फैंस यहाँ पर आपके एनीवेज हैं, बहुत पूरे दुनिया में हैं, हमने बहुत सारा आपका काम देखा है। मेरी उर्दू हिंदी भी करेक्ट कर देना, उर्दू तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, हिंदी ज़रूर करेक्ट कर देना। मगर ये बताइए कैसे लगा आप इस फिल्म में हैं? आपको हमेशा हमने एक अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है, यू नो, यहाँ पर थोड़ा सा इनलाइटन कर सकते हैं? यहाँ पर भी जो जितना आपने ट्रेलर में देखा होगा, काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैंने कभी ऐसा प्ले किया नहीं है। मेरे लिए तो बहुत कमाल की जर्नी रही है। अनुपम सर के साथ काम करने का मौका मिला, नीना मैम के साथ काम करने का, मतलब ये मैं कब से चाहता था कि ये हो, और फाइनली इस फिल्म के ज़रिए एक सपना पूरा हुआ। थैंक यू अजयन भाई फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस पार्ट। और जब इन्होंने फ़ोन पर बोला ना कि हम मतलब ये टॉकिंग टू नरगिस ऑपोजिट यू, क्या मुझे नरगिस कौन
कौन नरगिस? तो मुझे तो काफ़ी टाइम तक यकीन नहीं हो रहा था. जब वहाँ पहुँच गए तभी भी मुझे यकीन नहीं होता. When she came on the sets, तब मुझे मतलब भरोसा सच हुआ नहीं कि बोल रहा, ये बहुत सच नहीं बोल रहा है. ये नीना मैम की खासियत है. अरे तो ऐसा लगता था ये दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं. Oh. That, So basic. that the credit goes to her. Goes to her, absolutely. इसने उनको इन्होंने At उसको ease at ease किया At ease किया, absolutely. by being herself. Thank you so much, Nargis. So Sharif, you're also playing a Punjabi character in this. Anything because हमने सुना आपके बहुत सारे characters जो आप evolve होते आए हैं as an actor और हर character को आप audience ने बहुत पसंद किया है आपको. ये character के साथ हम क्या expect कर सकते हैं? इस कैरेक्टर के साथ में बहुत मस्ती है, बहुत फन है और काफ़ी प्यार है, बहुत लवेबल सा कैरेक्टर पंजाबी में बोल के दिखा दीजिए. चलिए. इतनी पंजाबी तो सानू आंदी नहीं है बट आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. जो मेरा कैरेक्टर का नाम है उसका नाम है सिनेमन सिंह, जैसे हनी सिंह वैसे सिनेमन सिंह. तो वो गाना वाना भी गाता है, मस्ती भी करता है और पेट्रोल पंप चला रहा है और खुद अपना एक म्यूजिशियन का स्ट्रगल भी चल रहा है साथ में. तो मज़ेदार है. तो सेट पे आपको अगर जैसे हम अभी भी अनुपम सर से बहुत डरते हैं, कुछ ऐसे था डर का? कैसे मतलब जैसे आप पहली बार जब स्टेज पे गए तो हाउ वाज द फीलिंग टू वर्क? अरे यार इनसे कौन कैसे डरेगा यार, इतने क्यूट इंसान है. हमने इतनी मस्ती की है. ये बुलवाना था मुझे कि क्यूट इंसान है. हाँ. यही बुलवाना था मुझे तो मैं मतलब आई वुड लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स एंड जब अनुपम सर के साथ में सीन होते थे तो मजा आ जाता था. मैं तो बहुत डरती हूँ उनसे, अनुपम सर. any thing I mean if I can know from you Ajay sir that is there some good memories attached if you can just share with us while filming the film? कुछ मजेदार किस्सा कुछ हुआ जो आप शेयर कर सकते हैं? Yeah, there was lots of. We had it was a very small crew, and we shot it in New Jersey. So it was almost like family, there were only like 30 to 40 people in the crew. So one of the things what happened was, I don't know, sir, ma'am, if you remember, we had the scene on the bench, which is one of the important locations of the film, where you sit down, and sitting opposite, there was a big crowd of people, which is very rare which happens in US. So people were coming, bringing their camping chair. There was camping happening, and they were watching the shots. And whenever the shot happens, they would say excellent, and they will start clapping. So my job now, I can't say anything. I can't go back and say, sir, one more shot. Retake one more क्योंकि audience ने बोल दिया. I'm like. So we had so much fun filming this, and Sharif's character too. I keep telling him, it's a very tricky character to play because if you go one notch up, it could be a caricature role. So he had played it exactly on that perfect note. So he has done an amazing job to just like all of them. I think also I'm glad you reminded that it was a very small unit, about 30, 34, 35 people. We had a very good producer team. We had Kishore Variath who produced the film with Ashutosh and Anita, and they were like food suppliers also to me. Ashutosh used to cook food for us, who was our producer, and we खुद बना के इनको अपनी बीवी के खाने पे इतना यकीन नहीं था, तो वो खुद बना के खाना खिलाते थे. और हर शूटिंग में कोई भी इंडियन फैमिली आती थी, आज आपके लिए क्या खिलाएं, क्या लेकर आएं. तो I think any film which has on-set vibes which are warm and happy and pleasant, that gets translated into films also. I always believe that. Well, I can see that. कैस्पर, इसका कैस्पर है नाम फिल्म में. हमारे ये छोटे से कैरेक्टर्स हैं. इसका और मेरा बड़ा टेंशन चलता रहता था बिकॉज वो मुझे छोड़ के चले जाते थे घर वाले, बिकॉज दे हैव लाइक इन अमेरिका दैट हैपन्स, और मैं उसको कैप्सूल बताता था. तो कैस्पर वॉज अ ट्रेन्ड डॉग बट बड़ा मूडी था, और उसकी जो ट्रेनर ने था उसको स्पॉइल किया हुआ था. बिफोर एवरी शॉट शी विल गिव हिम फिश का कुछ देती थी, और फिश खाता था वो, और मेरे को उसको प्यार करना था, मगर एवरी टाइम यूज्ड टू and mouth used to sort of have such a fish odor that it was tough to be sort of loving and things like that, but he was very cute. किसी बड़े महान कलाकार ने कहा कि दो लोगों के सामने एक्टिंग मत करो, एक किसी जानवर के सामने और एक बच्चे के सामने. तो there was no acting, and I think that very good device that Arjun used was that his dialogue will come in a blurb.
So that was very good. It was Very wonderful. nice, sir. And even the other characters, when you see the film, 10 तारीख को दोस्तों पीछे जो हमारे कैमरा के पीछे खड़े हैं, 10 फरवरी को रिलीज हो रही है, छोटी सी फिल्म है, इसको फैला दो, आग लगा दो इसमें, ऐसा कुछ बना दो. It's very important because all the other characters, bikers, and today also I want to thank all the bikers who brought us Are they here? to this place. Yes, of Oh, course. a big hi to you all, big hi. They were professional bikers like these people are, but उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है. और वो ना बहुत सॉलिड, हाँ, बड़े बड़ा शोल्डर, हट्टे कट्टे इतने सब, और मेरे से बात करेंगे इतनी सॉफ्टली, मैम आर यू ओके? या दे वर वेरी स्वीट, दे वर लवली. All right, so I thought it's looking brilliant, but I know the entire media which is sitting here, and there are a lot of fans who actually want to talk to you and know a little more about the film. So can I open the Q&A for the media, if I may? Is the mic and the ट्रेलर देख के ready? जाना सतीश जी ट्रेलर देख के जाना, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ट्रेलर देख के, आप लेट आए हो, ट्रेलर देख के जाना प्लीज, ट्रेलर देख के जाना. ये इल्तिजा है देखा आपने? आपसे. एक मिनट जरा माइक पे बुलवाने दो इनसे, सतीश जी से. क्या बोला आपने ट्रेलर के बारे में? Anyway, my dear, there are two dearest people of mine, friends of mine, Anupam Kher and Neena Gupta are there, and Nargis, of course, colleague, my son-like actor, you know, whom I know when he was a little child. And congrats, the director, Mr. Director. I saw the trailer, Okay. and I think it's fantastic. That's all. And as always, you know, the performance is the concept. You want to be, you are a Rocky, you are a rock star, you are Rocky. You might not win a boxing match, but you won her and sent her to India and helped her in her journey, you know. That is Wow. fantastic, you know. Two rock That is- stars in one frame. Please do not miss this. So The this camera. is something, I'm sorry, my office is nearby, but as usually it happens, I went to a wrong theater. Actually, when trailer was happening here, he told me कि तेरे ऑफिस के सामने है, पर आई डिड से मेरे को लगा फन रिपब्लिक मेरे ऑफिस के सामने है, मेरे को ये नहीं पता था ये भी मेरे ऑफिस के सामने है. So I went to the wrong place as always, you know. Thank you. Thank you very much. Thank you very much and thanks a lot. ये आपकी बारी है. Trailer is really fantastic and I जा रहे हो? wish. आप आए, अशोक पंडित जी आए, really Thank you, thankful. thank you. अशोक जी बैठे रहिए अभी. Thank you, Ashok. But thank you. Thank It's you. really I'm touched. ये हमारी दोस्ती 42 साल से है, 42 years से है, और हम एक दूसरे के कंधे हैं. Thank you. Thank you, Satish sir. Thank you for coming here and using this again. Thank you. Yes. Okay, so I think we are ready and steady, and let's go with it. We have the mic right here. I think there will be somebody who actually can आप continue. हाँ, you can continue. Mic आपको follow करेगा जहाँ पे भी. So we can go on. Can you raise hands so that we can actually? अब अपना माइक दे दो. I'm giving that. हाँ. Anyone raising hand? Plenty. Okay, I can't see. Maybe. Thank God. कुछ तो हमने प्लांट भी किए हुए हैं रेज हैंड Oh, पे. okay. I'll go to you. Hello. Hi Nargis, Vishal here, right here. पता था तुम्हारा पहला सवाल इसी से होगा. टाइटल रोल करने का कोई फायदा नहीं है. सही बात है. सर आपसे भी पूछूंगा मैं सर. पूछिए. नरगिस मैं अपने पहले जज्बात समझता हूँ विशाल. सॉरी सर. भूल गया. नहीं मेरा कोई हक नहीं है इन पे भाई. आप पूछो. नरगिस राइट हियर. नरगिस यहाँ पे. You see? Okay. नरगिस मेरा सवाल था कि आपका जिस तरह कमबैक है, it's your comeback to India and she's coming back to India. ये Yeah. comeback हमारा word जो है बड़ा ही गंदा है. She's come back to India. Yes, She's never gone. हमारे न्यूयॉर्क में बहुत काम कर रही हैं ये. Yes, it's your comeback to India and as well as बड़े पर्दे पे comeback है. How excited are you for the role? And अनुपम खेर जी है, नीना जी है, इतने legend actor actress है, उनके साथ काम करना किस तरह का experience था आपका? I said this before, my experience with the legends have been absolutely amazing, and I feel honored and privileged and blessed because I learned a lot from them, which is really important. Like, you're like a mentor, which is amazing, and I need that in life. And my coming back to India, I'm very excited to be a part of this film because this film is absolutely amazing. I've seen the change that's happened since the last couple of years. A lot of films or movies, series are happening on OTT, and I've
see now that the content is the most important thing. And when they asked me to be a part of this film and I read the story, I just knew right away that the story is, I don't know what the word is, like, original. Yes, that's a good word. The film is original, it's real, the characters in here are all important. You know, I'm a supporting actress here, and I know if my character was not there, something would be lost. Does that make sense? Everything will be lost. Yeah, everything. You're too. He's too kind. But I realized that all our characters are so important to create something so realistic, and it was just such a pleasure to be a part of something so original and real. Does that Thank make you. sense? अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे भी है. आपने अपने बाइकर्स फ्रेंड्स के लिए एक टैटू भी बनाया है मूवी में. अगर कुछ आप बताना चाहोगे उसके पीछे किस तरह की स्टोरी है? हाँ, मैंने ज़िंदगी में कभी कहीं भी कोई भी टैटू वगैरह नहीं बनाया. तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसमें टैटू था, तो मैंने कहा चलो अभी तो आई कैन ऑफिशियली हैव अ टैटू. एंड वो अच्छा है सिस्टम यार. वो मतलब वो स्टिकर लगा दिया था उन्होंने और बस मैंने ऐसे एक्टिंग की जैसे दर्द हो रहा है. और वो पर रहा, वो 1-2 हफ्ता रहा वो. जब मैं उधर न्यूयॉर्क में वर्कआउट करता तो मैं जानबूझ के आधी गंजी पहनता था ताकि लोगों को लगे टफ गाय कोई टैटू लगा के घूम रहा है. But those bikers were amazing, and even today the people who brought us here, we wanted to sort of make it into a different kind of an entry. There's a sense of power in a motorbike, but people who are riding are very very kind and generous people. वो सारे actors जो हमारे साथ वहाँ थे वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा. It was wonderful the way our line producers, our producer organized it for everybody. It's very, वरना होता कि chaotic है, but very professional people were there. नीना जी, आपसे एक और सवाल रहेगा, लास्ट सवाल मेरा. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, मसावा रिसेंटली गॉट मैरिड एंड ऊंचाई को जिस तरह की सक्सेस मिली, आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए. पर मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह ये मूवी में ट्रेलर में बताया है कि बाहर के लोग में कि किस तरह से, सो व्हाट वाज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट द स्क्रिप्ट व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? आपके रोल की भी बारे में बोल सकते हो थोड़ा भी. वोडका नहीं, इसका दिखाएंगे वोडका वोडका वोडका. नहीं, मुझे जीवन में भी जनरली सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है. सिंपल, मैं कपड़े भी सिंपल पहनती हूँ, खाना भी सिंपल खाती हूँ. मुझे इस फिल्म की ये बात बहुत अच्छी लगी और मेरे रोल की भी बात और टोटल फिल्म की बात सीधी सा सिंपल है. कहीं कोई नाटकीय चीज़ नहीं है इसमें, एकदम रियलिस्टिक है और एकदम सिंपल है. ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस फिल्म के बारे में और इसलिए मज़ा भी आया. थैंक यू. Can we just pass it on to the next one, please? Can you just... Adya, can I please know how exciting was it getting all these people together and how difficult was it? Yeah, I mean, it started off with Anupam sir. At that point of time, he was in New York shooting for his hit series New Amsterdam. So I went and told him the script, and immediately he got on board. And then that's how he helped me reached out to Neena ma'am. And I think Neena ma'am, I did the this thing through narration through the Zoom because this was COVID and all those things. So she automatically, I think I've never done that before. So I was very nervous doing the, but she immediately liked the role, and as soon as I got these two, I knew that 90% of my job is done. And then Sharif joined and Nargis, all these things happened. But one of the hardest things was it was during the COVID time, so it was all remote, trying to figure things out. So that was the hardest part. Yes. A lot of protocol, COVID protocol we had to follow. Yeah. And I also want to add to what he said. I think actors actually are very greedy for a good role. A good role very rarely comes. हम बाकी काम तो काम करने के लिए करना होता है. 80% तो काम इसलिए करते हैं क्योंकि काम है, पैसा कमाना है, नौकरी पे जाना है. But ऐसे रोल मिलते हैं तो हम टूट पड़ते हैं. दुनिया का कोई भी एक्टर हो, they all want to have a good role. Hi, over here to your right, sir. This is Mayur from Beyond Bollywood. I have one question for Anupam sir, one for Nargis, and one for Sharif.
अनुपम जी ऑब्वियसली मेरे से नहीं। माफ करना मैडम, आई थिंक 3 भी बहुत हो जाएंगे। अनुपम जी फिल्म में जो ऑब्वियसली रॉकी बैल्बोआ को लेके जो डायलॉग है, और जैसे ही मैंने वो डायलॉग देखा और मेरे जहन में एक बात आई कि ऑब्वियसली आप काफ़ी you're a veteran of the industry and a veteran of life. I'm also not very young. बट मेरे पर्सनल लाइफ में जब मैं कोशिश करता हूँ, चाहे मेरे भांजे हो या when I come across young kids, और उन्हें कोई चीज़ जो शायद जिसकी जानकारी मुझे है या जो मेरे जनरेशन में आई थी, अगर उस चीज़ के बारे में बताता हूँ तो कई बार ये होता है कि they don't take it serious. उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बड़प्पन दिखा रहा है, अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। ये चीज़ मैंने महसूस की है। तो इसके बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से कोई मैसेज यंगस्टर मेरे ख्याल से अपने से कम उम्र के लोगों से बात करने के लिए उस उम्र का हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। If you're talking to a 16-year-old boy, you have to talk to him like a 16-year-old man. The problem is that we should not be condescending कि मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ, because आदमी सीखता उसी से है ज़िंदगी जीकर, किसी borrowed knowledge से नहीं सीखता at the end of it. It's a दस्तूर है लाइफ का। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माँ रोटी बनाती थी तो मैं तवे पर हाथ लगाने की कोशिश करता था, तो मेरी माँ हाथ पे ऐसे मारती, तो मेरी एक दिन दादी ने कहा कि इसको एक बार तवे पे हाथ लगाने दे, उसके बाद नहीं लगाएगा। तो मेरी माँ का दिल दहला कितने बार, उसने कहा चुप है, ठीक है लगा ले, तो उसके बाद लगाया, पर मैंने कभी नहीं लगाया। So when you are talking to your nephews or nieces or anybody, don't try and preach them, don't try and teach them. That's what this film is about. It's not about preaching, it's about sharing. So I think if you do that, both as an actor, I learn more about acting by being a teacher in an acting school, because my students, they sometimes teach me, oh, this is also an interpretation to a scene. आदमी जब अपने वेटरननेस का, लेजेंडनेस का बोझा अपने सर पर लेके चलता है ना, तो फिर सीखने को कुछ नहीं होता है। I don't carry the burden of Anupam Kher on my shoulders. I'm happy to be a newcomer. आपने कहा कि वेटरन भी हैं, ये भी हैं, उम्र में भी नहीं है, अभी तो उम्र शुरू हुई है दोस्त। Just one question for you, Nargis. Like looking at your career, you started with Rockstar, and you are this ethereal beauty. And looking at your career, if I have to say in Hindi cinema, and some of the works which I liked of yours personally, one is I think Madras Cafe, and there was a film called 5 Weddings, I think, which I happened to see a few years ago. And I think one thing which I observed was that the moment obviously you have to play a character where you have to speak in your natural tone largely, that is where you're most comfortable. So is this how you also would want more such roles, or you're open to anything? I'm obviously open to anything and everything, and yes, of course, English is my first language, so I am at ease with English, so thank you for noticing that. But yes, I'm open to any role, because as an actor, we have to work hard. It's not an easy job. So if you're willing to work hard and work on the role, you can do anything. But is Hindi still the biggest challenge for you after all these years? I wasn't born and raised here. I didn't grow up with Hindi, so it will always be slightly, not like English. That's what I can say. शारिफ जी, ऑब्वियसली आपका तो बड़ा मजाक कैरेक्टर लग रहा है, नाम भी बड़ा सिनेमन सिंह है, बट उसके जो बाल है उस पर तो शेड कुछ ब्लूबेरी शेड जैसा लग रहा है। तो जब आपको बताया गया कि बाल भी ऐसे ब्लू करने पड़ेंगे, तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो बहुत खुश हो गया था कि पहली बार मेरे लुक पे इतना काम किया जा रहा है। इनफैक्ट हमने 4-5 कलर्स इस्तेमाल करके देखे थे, पहले ब्राउन किया, ब्लॉन्ड किया, ग्रीन किया, फाइनली जब ब्लू देखा तो लगा कि हाँ, मतलब तो ये कॉल क्या आपका था कि ब्लू सबसे बेहतर? सब पूरी टीम का कॉल था, मतलब हम सब ने मिलके, मुझे भी देखने में अच्छा लगा, मुझ पर ब्लू थोड़ा अच्छा लग रहा था। गाना बजने लगा, फीलिंग ब्लू। थैंक यू सो मच। अगर हो गए सारे सवाल तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब आप बिल्कुल स्तब्ध रह गए हमारा ट्रेलर देख के, आपके पास शब्द नहीं है हमारे से कोई सवाल पूछने के, और ये अच्छी बात है, ऐसा बहुत कम होता है। यस मैम, यस मैम, यस। This is Asta from Awesome TV. Yes. My question is to Anupam Kher sir. Firstly, I love your work, absolutely love your work. Thank you. And ये फिल्म में आपने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला
जो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगा कि सवाल ये नहीं है कि हम कितने ज़ोर से गिरते हैं, सवाल ये है कि हम उठते हैं या नहीं। वाह, आपको याद भी हो गया। हाँ, वंडरफुल, वेरी बहुत बहुत अच्छा डायलॉग था। हाँ। एंड आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जब आपका करियर लो चल रहा हो, पर वो फिल्म जो आपको हमेशा याद रहेगी? मेरे को मेरे माता पिता की लाइनें हमेशा याद रही हैं। फिल्में तो हमेशा असर करती हैं। मेरे फादर ने बहुत यंग एज में 9th स्टैंडर्ड में था तो उन्होंने एक किस्सा हुआ था और फिर उन्होंने मुझे समझाया था कि, और उन्होंने एक शब्द जो सेंटेंस बोला था वो इस सेंटेंस से भी थोड़ा सा मतलब ये डायलॉग उससे प्रभावित है कि फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। तो जब भी ट्रेलर शुरू नहीं हो रहा था बहुत देर तक तो हमारे प्रोड्यूसर साहब गए थे, लोग मार गए, अभी ट्रेलर नहीं शुरू हो रहा। मैंने कहा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इनको बोलेंगे माफ़ कर दो, कल आ जाना दोबारा। तो आई थिंक दैट्स हाउ माई लाइफ हैज़ बिन. That's how I, in a very, very big film, I had a facial paralysis in Hum Aapke Hain Kaun. I went bankrupt in 2004, almost. Then I rose up. वही तो है पावर. फेलियर डरा नहीं सकता आपको. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आपकी पिछले साल 3 फिल्में कामयाब हुई. अरे मैं तो बहुत सालों से कामयाब हूँ. आपको नोटिस अब हो रहा है, बट अपना यू आर हैप्पी है कि नहीं? आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. हाँ, और टचवुड कर लो सब, अच्छे रोल आ रहे हैं. अच्छे रोल आ रहे हैं. मेरी एज के सिर्फ मम्मी नहीं हूँ, बहुत रोल है. और एक फिल्म ऐसी है जिसमें मेरा जो कैरेक्टर है, फिल्म का नाम भी वही है. जैसे अनुपम ने कहा कि पहले छोटे छोटे फेसेस आते थे और अब अनुपम का बड़ा मेन फेस है, तो ऐसे ही जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का नाम मेरा कैरेक्टर है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी. और मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये ना सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये होना ही नहीं चाहिए. हिंदुस्तान में ही है सिर्फ नहीं, सब जगह कैरेक्टर एक्टर. नो, ये कैरेक्टर एक्टर है. हाँ, ये कॉमेडियन है, कॉमेडियन, ये विलन है. हाँ, मतलब कि पंचायत कहाँ से कॉमेडी है, यू नो व्हाट आई मीन. और सपोर्टिंग एक्टर क्या होता है? एक्टर तो एक्टर ही है. मैं अपना एक्टिंग तो अच्छी करूँगी ना. सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर ये इसलिए है कि ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए ज़्यादा इनाम देने होते हैं, तो शायद इसलिए करते हैं. बट मुझे लगता है ये हट जाना चाहिए. हाँ, एक फिल्म है जिसमें नरगिस ने भी अच्छा काम किया, अनुपम ने भी किया, मैंने भी किया. इसने शायद इतना अच्छा नहीं किया, उसको मत दो. मतलब ऐसा कर सकते हैं ना. ये थोड़ा ना सपोर्टिंग एक्टर, कॉमेडियन, हाँ, विलेन. पहले तो विलेन बहुत होता था. सो आई थिंक ये हट जाने चाहिए. तो ये हमारे लिए, जैसे अनुपम ने कहा, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैं पोस्टर पे हूँ और मेरा अच्छा चेहरा उसमें है, बड़ा चेहरा. अब आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा और ये आप ही से आ सकता था. You may be the PRO of this company, of this film. The film is releasing on 10th of Feb, and it's in Hindi, as you must have noted. एक न्यूज़पेपर लिख रहा था बार कि ये अंग्रेज़ी में है. And we need, अगर आप मेरा और नीना का और इन सब का पोस्टर, बड़ा पोस्टर बार देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का थिएटर में आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है. हम पूरी कोशिश करेंगे. मैं पर्सनली हर एक होर्डिंग वाले के पास गया हूँ कि मेरा होर्डिंग लगा दो. मैंने सबसे भीख मांगी है ऑलमोस्ट कि अब मेरा ये कर दो. बिकॉज ये जो जद्दोजहद है ना, ये स्ट्रगल जारी रहता है और अच्छा भी रहता है. मैं घर पे बैठा रहूँ और सोचूं कि अपने आप ही हो जाएगा. मैं ट्विटर पे हम लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लगा दो, ये यहाँ पर कर दो. मेरा स्टाफ कभी मुझसे तंग है. हरमन मस्ट फेड अप ऑफ मी बिकॉज वो नीचे आ गए मोटरसाइकिल वाले, उनको जवाब नहीं आ रहा. राठी जी के भाई का फ़ोन आ रहा है, वो नीचे क्यों नहीं आए. बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. इफ़ यू आर supposed to be happening, then you have to happen and make things happen. So I think it's a great opportunity and आपको अपने घर वालों की कसम है कि सबको 10-10 लोगों की टिकटें खरीद के देना और I think that should be the. But I want to now introduce the people behind the show who have been amazing producers, presenters. Ashutosh Vajpayee and Anita, please come on stage. Rathi ji, thank you for supporting this film. Please come on stage. You have been wonderful support presenting the film here. And
Anybody who is related to the film, please come on stage. Individually मुझे पता नहीं है, हमारी producer आई नहीं है जो वो अमेरिका में रहते हैं. Asha, no, she's not come. She's gone to Kerala. But thank you for people who have worked backstage or who have worked backstage. I'm saying मुझे stage पे रख stage है. Please come and हमारी तस्वीर लो आप, फिर उसके बाद बाहर जाके बात करेंगे. And there is some कुछ नाश्ते वाश्ते का producer साहब इंतजाम हुआ है. अच्छा. Thank you so much, the entire cast and crew which is here. Thank you so much, and all the very best for this film. I'm sure it's going to do wonders. I'm sure it has. इस बीच में अगर मैं बोलती रहूँ तो कुछ प्रॉब्लम है. Anyways, thank you so much for being here, and I think we will have volunteers to probably later to tell you how the next interview and things like that will be lined up. So that will be sorted completely. And thank you for joining us tonight. You've been good. Thank you. एक बार वेट हो गया पिक्चर. सोलो सर आशुतोष जी और तरुण जी एक बार प्लीज आप दोनों ऊपर जाइए. मैं पिक्चर करता हूँ आपको. थैंक यू जी. जिसको 1-on-1 करना है पार कर सकते हैं. ठीक है. और हाँ सोलो पिक्चर कर लेते हैं. सोना जी का सोलो लेना. हॉट लग रहे हो आप. सीटी बजाए. जोर से सीटी बजा दो, वो अच्छा पोज करेंगी. And there you go. That is Neena Gupta for you guys. And now comes the handsome and the chivalrous. This is Sharif Hashmi. Come on, make some noise. And let's have the beautiful Nargis Fakhri here again. बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती. सीटियां जोर से, जज्बाती सीटियां जो बजा रहे हैं जोर से. And there you go. Woo! How nice, how nice. Actually ये जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. बहुत यूनिक जोड़ी है ये. जरूर देखेंगे हम. We are looking forward. And now, ladies and gentlemen, give it up for Anupam Kher. More noise. बाइकर्स का किसी का फोन नहीं निकला था. थ्रूआउट हम बात कर, जैसे ये आई सबके बाइकर्स के फोन निकल आए. Thank you so much. Thank you. Okay, come on. कुछ एक बॉक्सिंग पोज भी हो जाना चाहिए. The boxing pose. Yes, the boxing pose. Yes, come on. This is now synonymous with the poster and the film. Oh my God.
Neena ji is looking very strong to me, yeah. Neena ji is looking like very strong. They're early maar degi. अच्छा तो अभी डिमांड हाई इन डिमांड 2 lines. We are really honored to get invited for such a special occasion. This is the first time that we are coming here and we look forward. Like, we love you so much. Thank you for calling us. Thank you. Lovely. It will not be seen. Get the front one.